Hello students. In the last lecture we discussed about properties of genetic material, and I hope you understood very well the properties of DNA and RNA, and you also understood why DNA is a better genetic material than RNA. But because DNA and RNA both are used as a genetic material, the question that comes into mind is that what molecule was the first genetic material. जैसे कभी कभी हम लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, तो उसी तरीके का ये एक जनरल क्वेश्चन है कि what molecule was first utilized as a genetic material during the course of evolution. तो इसका आंसर है RNA was the first genetic material. Even though DNA is a better genetic material, predominant genetic material in most of the life forms, RNA was the first genetic material, not DNA. And there are some evidences. As we study evolutionary processes, we find different types of evidences for RNA being the first genetic material, and we still encounter several biochemical processes, biological processes where RNA still functions as an important molecule for catalyzing the biochemical reactions, and also in some viruses it functions as a genetic material. So that is one of the evidence. Now essential biochemical processes, for example translation, splicing, different types of metabolic reactions, they have all evolved around RNA. We will see how translation has evolved around RNA and how still protein synthesis, that is translation, is dependent completely on RNA. We know very well that proteins are synthesized from mRNA by the process of translation. So mRNA provides the genetic information which is required for joining amino acids in a specific sequence with each other. So this is first type of RNA that is involved in protein synthesis. The second type of RNA that is involved in protein synthesis is transfer RNA. Ribosome forms peptide bonds between the amino acids during protein synthesis, that is okay. But who brings those amino acids towards ribosome? Ribosome एक जगह पे mRNA के साथ बाउंड है, वो साइटोप्लाज्म में से या कहीं से जाके अमीनो एसिड्स को ब्रिंग नहीं करता है, तो अमीनो एसिड्स को उसके पास राइबोसोम के पास लाने का काम करता है ट्रांसफर, बिकॉज दे ट्रांसफर द अमीनो एसिड्स टुवर्ड्स the ribosome during protein synthesis. That is why they are called as transfer RNA molecules. So they also have an important role of transferring amino acids towards ribosome during protein synthesis. And the third type of RNA that is involved in the process of translation of protein synthesis is ribosomal RNA, which is an important structural and functional part of the ribosome. We know that ribosomes are made up of ribosomal RNAs, different types of ribosomal RNAs like 5S, 5.8S, 16S, 18S, matlab, or if we consider all different types of RNAs of prokaryotes and eukaryotes. And they are also made up of ribosomal proteins. But the main catalytic activity of joining amino acids with each other with the help of peptide bonds is catalyzed by RNA molecules, ribosomal RNAs of the ribosome, and not by the proteins of the ribosome. So if this is a polypeptide chain, a protein which is synthesized by this translation process, and these are amino acids 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., then every two amino acids, they are linked with each other with the help of these peptide bonds, and formation of these peptide bonds is catalyzed not by any protein but by the ribosomal RNAs of the ribosome. And when the ribosomal RNA or any RNA, it functions as an enzyme to catalyze the reaction, it is called as RNA enzyme. And such types of RNA enzymes are shortly written as ribozymes. The ribo word indicates ribonucleic acid and the zyme word indicates the enzyme. So the molecule is a ribonucleic acid enzyme, RNA enzyme. Okay, so from this discussion it is pretty much clear that translation process has evolved around RNA, and the same thing is true for splicing, but we haven't yet studied the details of splicing, so it will be difficult for you people to understand
the mechanism of splicing right now. We'll discuss about it later on after the transcription process. So in general, in splicing, the non-essential sequences from the RNA are removed and only the essential sequences are joined with each other. But that process of splicing has also evolved around RNA. Now, because RNA is catalytic also, it is unstable, because any molecule which is catalytic performs enzymatic reaction, performs metabolic reactions, is involved in the reactions as an active molecule, and that is why it is pretty much active, chemically more active, that is why chemically less stable, matlab unstable. And if a molecule is less stable or unstable, it should not be used as a genetic material in large form. And that is why DNA has evolved from RNA with some chemical changes or chemical modifications, and we very well know what types of these chemical changes or modifications are. We studied that the difference between the DNA and RNA is in their pentose sugar. The pentose sugar that is present in RNA is the ribose sugar, which contains 2' hydroxyl group, which is reactive and is responsible for the self-destruction of the RNA, as we studied in the last lecture. But DNA lacks that 2' hydroxyl group. It contains only hydrogen at that position, and that is why it is more stable, because a nucleophile O- is not synthesized spontaneously inside the cell in the DNA structure. And another reason why DNA is more stable is that it contains thymine in place of uracil. Because uracil can be formed by deamination of cytosine, there are large chances of mutation in RNA, but in DNA, because uracil is recognized as a foreign, it is removed if it is formed due to the deamination of cytosine. And that is why DNA does not contain uracil as its normal or common base, it contains thymine. So these two chemical modifications in RNA produces DNA. So the conclusion of this discussion is that RNA was the first genetic material during the course of evolution, early stages of evolution of the life, and later on, due to the instability and more chemical reactivity of the RNA, DNA got evolved from the RNA, and now DNA is the major genetic material which stores the genetic information, and RNA is used in biochemical reaction. It is a central point of biochemical reactions, as we discussed that synthesis of protein, splicing, etc. they are evolved, and still these processes are being carried out with the help of RNA as an enzyme. We will see the next point, DNA replication, in the next slide. Okay, now we will study DNA replication. In case of bacteria, that is prokaryotes, DNA replication occurs continuously throughout the life of the bacteria. But in case of eukaryotic cells, DNA replication occurs only in a specific phase of the cell cycle, and that specific phase of the cell cycle is the S phase or the synthetic phase. And that phase is named as synthesis phase only due to the synthesis of, that is replication of DNA and duplication of the chromosomes. So DNA replication is basically production of multiple copies of DNA molecules. So एक DNA duplex से 2 copies बनते हैं, 2 DNA duplex से 4 DNA duplexes बनते हैं. इस प्रोसेस को हम DNA duplication या replication बोलते हैं. So DNA replication exactly किस mechanism से होता है, that was proposed by Watson and Crick, and that mechanism or the scheme of DNA replication which was proposed by Watson and Crick was called as semi-conservative method or mechanism of DNA replication. Why it is called as semi-conservative, that we will talk at the last of this slide, but we will see how exactly the semi-conservative mode of Watson and Crick for the DNA replication works. So this is a DNA duplex. According to Watson and Crick, what happens, the 2 strands of the DNA, they initially separate partially from each other, and this much region
of the double-stranded DNA is now not actually double-stranded, it is single-stranded, and this much region is double-stranded where the two strands are still in contact with each other with the help of base pairing between the nitrogenous bases. So यहाँ पे जो दो black strands है, जो original parental DNA के strands है, they are now single-stranded and they function as template. Template मतलब they will provide the information for the synthesis of new strand over them. तो इस single stranded black strand के ऊपर ये red वाला नया strand बनता है and the new strand that is synthesized is called as a daughter strand. So what type of information the template strand provides? It provides the information in the form of nitrogenous bases or in the form of nucleotides, and due to the base complementarity, base pairing, in the newly synthesized strand, adenine will be incorporated at the first position because in the template there is thymine. So thymine always base pairs with adenine. So in front of thymine, adenine will be added. Due to same base complementarity reasons, in front of guanine, cytosine will be added. And in this way, the new strand will be synthesized. The first nucleotide that is added in the new strand will be joined with the second nucleotide, that is cytosine in this case, with the help of a phosphodiester bond. Likewise, the second nucleotide will be joined with the third nucleotide and third with the fourth in the same fashion by the formation of phosphodiester bonds between every two nucleotides. So इस तरीके से टेम्पलेट से इंफॉर्मेशन कॉपी करके टेम्पलेट से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके नया डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा. सेम तरीके से ये दूसरा सिंगल स्ट्रैंड जो है पैरेंटल डीएनए का, ये भी टेम्पलेट के फॉर्म में काम करेगा एंड इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मोर डॉटर डीएनए स्ट्रैंड. तो यहाँ पे अगेन डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. तो यहाँ पे तो हमने इस तरीके से फ्रॉम बॉटम टू टॉप डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे इस टेम्पलेट के ऊपर डीएनए विल बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. तो यहाँ पे थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, गुआनाइन के साथ साइटोसिन के सामने गुआनाइन एंड एडेनाइन के सामने थाइमिन will be incorporated and the DNA, new strand of the DNA will be synthesized. So later on these two strands, parental strands, they will completely separate from each other and the two daughter strands will be completely synthesized on them. So at the end of the process of DNA replication, we get two duplex DNA molecules, two double-stranded DNA molecules which are identical copies of the original parental DNA molecule. And in each of these DNA duplexes, daughter DNA, double-stranded DNA molecules, one of the strand is the old black strand or the parental strand, and one of the strand is the newly synthesized or the daughter strand. So because when a new DNA duplex is synthesized, half portion of it, matlab one strand, is conserved from the parental DNA duplex and only one strand is newly synthesized. So there is conservation of half of the genetic material or half of the parental strand, parental DNA duplex. That is why it is called a semi-conservative method of DNA replication. अगर दोनों strand parental एक दूसरे के साथ रहते and दोनों daughter strands एक दूसरे के साथ, मतलब दोनों red strands एक दूसरे के साथ base pairing करते, तो इसका मतलब होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव है, मतलब दोनों ब्लैक स्ट्रैंड्स कंजर्व रहते हैं एक दूसरे के साथ. लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है. ये एक्सपेरिमेंटली भी आज प्रूव हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेशन इसी तरीके से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, एज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक. ओके, सो दिस वाज जस्ट अ प्रपोजिशन बाय वाटसन एंड क्रिक. इट वाज नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय देम. टुडे वी नो दैट दिस प्रपोजिशन इज ए करेक्ट explanation for the replication of DNA or synthesis of DNA, but who proposed it experimentally and how, that we have to see. We will see that in the next slide. Now we will study the experimental proof for the semi-conservative method of DNA replication, and this experimental proof for semi-conservative replication was given by Matthew Maselson and Franklin Stahl by their experiment. In their experiment, that is why that experiment, elegant experiment, is called as Maselson and Stahl's experiment. इन लोगों ने E. coli बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके
डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है ये प्रूव किया था। एंड लेटर ऑन कुछ दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है ये प्रूव किया था। सो विल सी फर्स्ट हाउ मैथ्यू मेजरसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। They used E. coli bacteria, they cultured the bacteria in a nutrient medium. अगर हमको laboratory में बैक्टीरिया ग्रो करना है तो we must provide some nutrients to the bacteria, otherwise the bacteria will not be able to survive and divide. So generally we provide nutrients in the liquid form or in semi-solid form. If we use semi-solid form, we use Petri plates for culturing of the bacteria. And if we use the liquid form of the nutrient medium, we can use test tubes or flasks, etc. for the culturing of E. coli or any type of bacteria. So, for example, in this flask, some E. coli cells are growing. I have drawn only one out of them. And the nutrient medium for the growth of bacteria that was given actually by Franklin and Stahl contained अमोनियम क्लोराइड एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड करने हैं तो वी मस्ट प्रोवाइड सम कार्बोहाइड्रेट सोर्स, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वी मस्ट प्रोवाइड अमीनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फॉर द बैक्टीरिया, एंड वी मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड elements because elements form macromolecules, and then these macromolecules are the functional parts of the cell and the organism. सो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल बनाना है तो पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब एलिमेंट्स सॉल्ट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए हम कोई भी नाइट्रोजन का सॉल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन आर यूटिलाइज्ड इन न्यूट्रिएंट मीडियम्स, बट इन देयर एक्सपेरिमेंट the Michelson and Stahl used only one source of the nitrogen, that was ammonium chloride. And in the first stage of their experiment, the nitrogen which was present in the ammonium chloride was N15 nitrogen, heavy isotope of the normal N14 nitrogen. N15 is heavy but not radioactive. Okay, and heavy, you know why it should be called as heavy. Normal N14 contains 7 protons and 7 neutrons. And this N15 isotope, which is heavier isotope of nitrogen, contains 7 protons and 8 neutrons, and because it contains 1 neutron extra, the weight of the nucleus increases, and that is why we call this nitrogen as heavy nitrogen. So when this heavy nitrogen was provided in the nutrient medium, अब जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन सारे माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स में this nitrogen N15 will be present. So nitrogen is present in amino acids of the proteins, nitrogen is present in the nucleotides of the nucleic acids, because every nucleotide is composed of 3 parts: phosphate group, the pentose sugar, and the nitrogenous bases, and we call these nitrogenous bases so because they contain the nitrogen. So at every position in the nitrogenous base where nitrogen is present, that nitrogen will be N15 nitrogen, and that is why DNA, which is one of the nucleic acid, will contain N15 nitrogen in its every nucleotide. So हर स्टैंड का हर न्यूक्लियोटाइड अगर हेवी नाइट्रोजन कंटेन करता है तो हम इस डीएनए डुप्लेक्स को ही हेवी डीएनए कहेंगे, बिकॉज एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ दिस डुप्लेक्स डीएनए कंटेन्स N15. That is why these 2 strands can also be labeled as N15 strands. तो ये जो E. coli बैक्टीरिया N15 मीडियम में ग्रो हो रहा है उसका डीएनए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और फिर इस डीएनए को, हेवी डीएनए को लाइट डीएनए से, N14 कंटेनिंग डीएनए से कैसे सेपरेट किया जा सकता है? तो दैट कैन बी, मतलब द 2 molecules can be separated from each other with the help of centrifugation, because in centrifugation we separate the molecules from each other based on the difference in their density. तो Michelson and Stahl ने density gradient centrifugation किया था, and in their density gradient centrifugation they used cesium chloride as a medium for the preparation of density gradient. तो cesium chloride is a salt which is a better material along with sucrose also to produce the gradients in the centrifuge tubes. So this is one of the centrifuge tube,
अब डेंसिटी का यहाँ पे ग्रेडियंट बना हुआ है। ग्रेडियंट का मतलब द बॉटम लेयर contains the highest concentration of the cesium chloride solution, then the second layer which is present on the first layer contains lesser concentration of the cesium chloride, the third layer contains still lesser concentration, and the fourth layer contains the least concentration of the cesium chloride. For example, इस bottom layer में there are 10 grams per ml of cesium chloride, मतलब 1 ml water में यहाँ पे 10 ग्राम cesium chloride डाला हुआ है. And for example, in the second layer there are only 8 grams per ml cesium chloride, and in the third layer there are 6 grams per ml cesium chloride, and in the fourth layer there are, for example, only 4 grams per ml cesium chloride. तो जहाँ पे सीजियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस सॉल्यूशन का डेंसिटी ज्यादा होगा, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी सबसे कम होगा. तो बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज द सॉल्यूशंस विल एक्वायर और ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशंस इन द टेस्ट ट्यूब. सो ये लेयर सबसे ज्यादा डेंसिटी का है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम डेंसिटी का है. एंड इस तरीके से अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो देयर इज इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और अगर हम बॉटम टू टॉप जाते देयर इज डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो डेंसिटी किसी भी डायरेक्शन में कम या ज्यादा होते जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये डेंसिटी का ग्रेडियंट है. तो इस तरीके से डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया था टेस्ट ट्यूब में. एंड दिस इज अ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब. तो इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में अब उन्होंने इस हेवी डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया. तो ये हेवी डीएनए वहां पे जाके मतलब सेटल हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग, जहां पे उसका डेंसिटी मैच करता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी एंड इस हेवी डीएनए का डेंसिटी जहां पे मैच होता है वहां पे जाके हेवी डीएनए सेटल हो जाएगा. क्योंकि अगर यहाँ पे डेंसिटी मैच हो गई और इसके नीचे जो सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी और ज्यादा है, तो दिस डीएनए व्हिच इज लाइटर देन दिस डेंसिटी कैन नॉट पेनिट्रेट द हायर डेंसिटी. तो अपनी डेंसिटी का सॉल्यूशन जहां पे वहां पे जाके ये settle हो जाएगा in the density gradient centrifugation. And you know, in the centrifugation the centrifugal force is applied on the molecule and that is why the molecule migrate along the centrifugal force. तो यहाँ पे centrifugal force इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं. Your NCERT book contains gravitational force as a word instead of the centrifugal force here. तो दोनों का मतलब लेकिन ये यहाँ पे सेम ही रहेगा. तो इस तरीके से हेवी डीएनए एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब सेडिमेंट हो जाएगा. और अगर यहाँ पे लाइट डीएनए होता N14 वाला तो उसका बैंड कहीं पे ऊपर आता, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है. तो जहाँ पे उसका डेंसिटी मैच होता है उस सॉल्यूशन में जाके वो सेडिमेंट हो जाता. उससे ज्यादा अगर सपोज यहाँ पे कोई लाइट डेंसिटी का मॉलिक्यूल होता, यहाँ पे नहीं है बट अगर होता और उसका डेंसिटी इस सॉल्यूशन से मैच कर रहा है तो इसके नीचे जो सॉल्यूशन है दैट इज हैविंग हायर डेंसिटी. तो अपने से ज्यादा डेंसिटी के सॉल्यूशन में कम डेंसिटी का मॉलिक्यूल या पार्टिकल नीचे नहीं जा सकता है इवन विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो वो यहाँ पे तैरेगा ऊपर ऑन द हायर डेंसिटी सॉल्यूशन, जिसको हम उसकी बुएंट डेंसिटी बोलते हैं या बुएंसी बोलते हैं, द कैपेसिटी टू फ्लोट ऑन द हायर डेंसिटी सॉल्यूशन. ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में द हेवी डीएनए मॉलिक्यूल वाज सेंट्रीफ्यूज्ड बाय द मेजल्स एंड स्टार, जिसका उनको टेस्ट ट्यूब के या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के बॉटम में बैंड मिला. मतलब डीएनए जहाँ पे सेडिमेंट होता है उसको हम जनरली पेलेट या बैंड बोलते हैं. तो ये हेवी डीएनए का बैंड यहाँ पे मिला. फिर उन्होंने क्या किया, इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट दे शिफ्टेड दीज इक्वल सेल्स ऑन द लाइट मीडियम. तो इस फ्लास्क में उन्होंने जो न्यूट्रिएंट मीडियम यूज किया है उसमें जो नाइट्रोजन सोर्स है दैट इज अगेन द सेम सोर्स अमोनियम क्लोराइड, but this ammonium chloride contains N14, the lighter isotope of the nitrogen, and that is why यहाँ पे जितने भी प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे उन सब में नाइट्रोजन जो होगा दैट विल बी N14, that is lighter isotope of the nitrogen. तो अब जो डीएनए बनेगा इस सेल के अंदर, सपोज यहाँ पे एक सेल है, इसका रेप्लिकेशन होकर 2 सेल बन गए. बैक्टीरिया में 20 मिनट में रेप्लिकेशन होता है, तो 20 मिनट में ये 2 सेल्स बन गए. तो रेप्लिकेशन होने के बाद ही सेल डिवाइड होता है, क्योंकि दोनों सेल को डीएनए मिलना जरूरी है.
तो 2 सेल अगर बन रहे हैं तो दैट मीन्स इस एक डीएनए डुप्लेक्स से 2 डीएनए डुप्लेक्सेस बन रहे हैं, तो 2 में से एक डीएनए डुप्लेक्स इस सेल में रहेगा, एक डीएनए डुप्लेक्स दूसरे सेल में रहेगा। अब अगर रेप्लिकेशन कंजर्वेटिवली होता है तो एक सेल में दोनों ब्लैक स्ट्रैंड्स चाहिए और दूसरे सेल में दोनों रेड स्ट्रैंड्स मतलब लाइट स्ट्रैंड्स चाहिए, एंड उस केस में वी शुड गेट 2 बैंड्स ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे अगर दोनों ब्लैक होते तो ये दोनों N15 स्ट्रैंड्स होते, मतलब हेवी डीएनए, तो यहाँ पे एक हेवी डीएनए का बैंड मिलना चाहिए था। और ये दोनों रेड स्ट्रैंड्स होते मतलब N14 तो इनका डेंसिटी डेफिनेटली इनसे कम होता, ये लाइट डीएनए होता और इसका डेंसिटी यहाँ पे आना चाहिए था। तो इफ डीएनए वुड हैव रेप्लिकेटेड कंजर्वेटिवली देयर शुड हैव बीन 2 बैंड्स इन द सेकंड स्टेप ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप और द एक्सपेरिमेंटल स्टेप, लेकिन यहाँ पे उनको 2 बैंड्स नहीं मिले, एक ही बैंड मिला। इसका मतलब इन दोनों डीएनए डुप्लेक्स का डेंसिटी सेम है, इसलिए वो एक ही जगह पे बैंड बना रहे हैं। प्लस द पोजीशन ऑफ द बैंड इज नॉट एट द पोजीशन ऑफ द हेवी डीएनए बैंड, इसका पोजीशन थोड़ा ऊपर है, दैट मीन्स इसका डेंसिटी हेवी डीएनए से कम है। सो दिस इंडिकेट्स दैट डीएनए रेप्लिकेट्स डेफिनेटली सेमी कंजर्वेटिवली, बट टू कंफर्म एडिशनली they kept growing the same bacterial culture on the same N14 ammonium chloride medium। तो अब 40 मिनट के बाद और एक राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन हो जाएगा। ये 20 मिनट के बाद हुआ था, ये 40 मिनट्स के बाद हो रहा है। तो 40 मिनट्स के बाद इन 2 सेल से 4 सेल्स बनेंगे, मतलब इन 2 डीएनए से 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है तो वो एग्जैक्टली कैसे होगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल फंक्शन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। तो इस ब्लैक टेम्पलेट के ऊपर एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, एंड बिकॉज न्यू डीएनए विल कंटेन N14 नाइट्रोजन इन देयर न्यूक्लियोटाइड्स, द न्यू डीएनए विल बी रेड and it will be labeled as N14 strand, and the old DNA is as usual, it is N15 strand। और ये दूसरा जो रेड मतलब N14 स्ट्रैंड है ये भी टेम्पलेट के फॉर्म में काम करेगा, लेकिन इसके ऊपर जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो N14 वाला ही रहेगा, क्योंकि अभी बैक्टीरिया N14 कंटेनिंग मीडिया पे ग्रो हो रहा है। तो बोथ दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स विल बी N14। तो इसका डेंसिटी लाइट होगा, मतलब हाइब्रिड डीएनए से भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट एक स्ट्रैंड N15 है, हेवी है, एक लाइट है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों स्ट्रैंड्स लाइट है। दैट इज व्हाई कंपैरेटिवली दिस DNA N14 DNA will be lighter than hybrid DNA, that is N14 DNA। अब सेम फैशन में ये DNA डुप्लेक्स भी रेप्लिकेशन करेगा। यहाँ पे भी एक N14 स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट के फॉर्म में काम करेगा, उसके ऊपर और एक N14 स्ट्रैंड बनेगा, 2 N14 मतलब लाइट DNA बन जाएगा, एंड एक N15 स्ट्रैंड जो अपने पैरेंटल काउंटर पार्ट से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से सेपरेट हो गया, इसके ऊपर और एक डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, एंड द डॉटर स्ट्रैंड विल बी अगेन N14, क्योंकि बैक्टीरिया भी N14 मीडिया पे ही ग्रो हो रहा है। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल है वो सारे N14 नाइट्रोजन ही कंटेन करेंगे। तो एवरी न्यूक्लियोटाइड अगर N14 है तो द कंप्लीट स्ट्रैंड विल बी कॉल्ड एज N14 स्ट्रैंड। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको 2 हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक N15 है, एक N14 स्ट्रैंड है कंप्लीट डीएनए डुप्लेक्स में, तो ये एक हाइब्रिड है, ये एक हाइब्रिड है, एंड 2 लाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है तो इस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए, एंड इन दैट केस देयर शुड बी 2 बैंड्स। These 2 hybrid DNA molecules, because they have the same density, they should form a single band in the density gradient centrifugation, and these 2 light DNA molecules, because they have the same density, they will form the single band of light density। तो इस तरीके से 2 बैंड्स यहाँ पे मिलने चाहिए, और एग्जैक्टली सेम तरीके से ऐसे ही 2 बैंड्स मेजर एंड स्टाल को मिले उनके 3rd स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट में, and that is why it was proved that DNA replication occurs semi-conservatively। okay? अब आपको जनरली यहाँ पे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एंड क्वेश्चन ऐसा होता है कि 4th राउंड या 4th जनरेशन में 80 मिनट्स के बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट, एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हेवी डीएनए मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट। तो आगे कितने भी जनरेशंस हो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है,
at every generation, if the same experiment is repeated, in every generation there will be only 2 hybrid DNA molecules. You can see here in the first generation there are 2 hybrid DNA molecules. In the second generation also there are only 2 hybrid DNA molecules. और अगर आप थर्ड जनरेशन देखेंगे which will come after 60 minutes, तो वहाँ पे भी 2 ही हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स रहेंगे. तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में 4 में से 2 हाइब्रिड 2 लाइट रहेंगे. थर्ड जनरेशन में 4 से 8 बनेंगे, 8 में से 2 हाइब्रिड 6 लाइट रहेंगे. एंड फोर्थ जनरेशन में 80 मिनट्स के बाद देयर विल बी 16 डीएनए मॉलिक्यूल्स. आउट ऑफ 16 ओनली 2 विल बी हाइब्रिड अगेन एंड 14 विल बी लाइट डीएनए डुप्लेक्सेस. ओके, तो आपको कितने भी जनरेशन्स पूछे जाए 100,000 जनरेशन के बाद भी अगर एक्सपेरिमेंट सेम है N15 से N14 के ऊपर बैक्टीरिया ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ generations there will be only 2 hybrid DNA molecules and remaining molecules will be light and there will be 0% of the heavy DNA molecule. Okay, तो ये एक्सपेरिमेंट इकोलाई में प्रूव करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है. बट लेटर ऑन अनदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट टेलर and his colleagues, they carried out experiments with radioactive thymidine to prove that replication occurs semi-conservatively in higher organisms also. Taylor and his colleagues carried out experiments in a plant called as Vicia faba, जिसको हम घेवड़ा भी बोलते हैं. उस प्लांट में रेडियोएक्टिव थायमिडीन यूज करके उन्होंने प्रूव किया कि हायर प्लांट्स में भी सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेशन होता है. ओके, वी विल स्टॉप हियर. वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू.